हेलो, नमस्ते, आदाब। आज हमारे साथ हैं थिएटर के पर्सनालिटी none other than मिस्टर राम मोहन होलागुंडी। वेलकम सर। थैंक यू फॉर बीइंग। सर, पहला सवाल, जैसे कि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद थिएटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Yes. एंड हाउ डिड योर जर्नी बिगन इन अ थिएटर? Well, I started my career way back in 1989. Tone Curtains is a theatre group, English theatre group in Hyderabad. Okay. उनके साथ मैंने शुरू किया है and from then onwards now it's almost 35 years. So been doing the thing. Theatre is like सभी लोग बोलते हैं तो it's become a norm now. Yeah, we have been living theatre and I have been breathing theatre, I should say. So वहाँ से like after the 10th, I think 10th के बाद मैं और कृष्ण प्रसाद बोल के one of my colleagues, I should say he's my bestie. So हम दोनों we were very passionate about theatre and we wanted to do something good in theatre. So 11th में, it was in 11th or intermediate we call. Yeah. Then it was intermediate. We both were from government junior college. महबूब कॉलेज बोलते हैं. अभी तो महबूब कॉलेज नहीं रहा, उसका नाम चेंज हो गया है. It is there but still the name has changed and everything has been enhanced and all. But हम लोग, then it was the government college and it was very notorious college. So because financially not that vibrant as such, my family was not that तो बोले कि चलो आप इसमें चले जाओ. And my subject honors were BPC, BPC. But we were very passionate about theatre. तो वैसा स्टार्ट हुआ. एवरी डे वी टू गो. ये माला पाशा कोट बोल के है, पाशा कोट इज एट पंजागुट्टा. जी. तो वहाँ पर प्रैक्टिस होता था. रात में 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है एंड सुबह के लाइक 1:32 तक. सो यूज्ड टू हैव वन बाइसिकल एंड वन हैज टू पेडल एंड वी डिडंट हैव द कैरियर. पीछे जो बैठने के लिए होता है वो भी नहीं रहता था, तो एक ठहरना, और जो उसके गाड़ी आते हैं ना उस पर ठहर के जाते थे हम लोग. तो वन हैज टू पेडल एंड वन हैज टू स्टैंड. तो इधर अप और डाउन दोनों देख लेते थे, यार तू करेगा मैं करूँगा बोल के. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इट वाज a very good learning experience from Tone Curtains. Yeah, we used to do lots of backstage. Character कुछ नहीं था. जाना, झाड़ू मारना, पूरा नीट करना, साफ सफाई करना, then serving snacks to all the actors and the participants and dinner वगैरह देना. So we used to do all these things and then when the set used to happen, set mounting होता था, उसमें help करना, backstage basically. For 1.5-2 years we did that. Then slowly they started giving us characters. There was this play Beckett बोल के, तो उसमें that's almost 2 hours 45 minutes का play है. तो I got a character. KP Krishna Prasad was the stage manager then for the whole thing, and I got a character throughout the play रहता हूँ मैं, but एक dialogue नहीं रहेगा. And on stage I have to stand there and last एक half an hour पहले I have one dialogue, that is I sir, बस इतना ही होता है. So like this we were like very happy. चलो कुछ ना कुछ मिला हमें. We used to practice and slowly we developed. That's how I started my journey. And then we have thought of informally, हम लोग खुद ही, मैं, मेरा भाई कृष्ण माधव होलगुंदी, he was also very passionate. He was doing his masters in anthropology from University of Hyderabad then. Yeah. So I was doing my plus 2 again. Then I started PG college Secunderabad mein. I started doing my BSc and all. Basically, actually, this was there, but passion था. But dad was from Air Force. So मुझे भी था कि भाई ये जुनून था कि भाई हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो let's get into it. So I did my NCC हो गया था. I had ABC certificate तीनों हो गए. Everything was fine and CDS also I cleared. But yeah, physical में थोड़ा ये हो गया because height का problem हो गया. Air Force के लिए था तो I didn't get through. So then it was almost like 3 साल तो हो गए थे. 94 my brother said यार अब ये नहीं हुआ, क्या करूँ, मैं सोच रहा था. तो then he said भाई तू तो थिएटर में you're so good, why not you join a course. Then course भी होता है. Then I got to know कि course भी होता है. So then he said yeah, Central University we have a diploma, PG diploma in acting.
So immediately I said, "चलो चलते हैं." The very first day, it was an evening course, 6 to 9 है, था, अभी नहीं है. So it was in Sarojini Naidu School of Performing Arts and Dance and Music वाला. So that was at Golden Threshold, Abid's के पास. Now it is not there. It is like closed. It has been made as a bus shutter वगैरह वैसा हो गया. बस स्टॉप जैसा. बस स्टॉप के जैसा बना दिया उन लोगों ने. Central City they use for the buses to be parked there. Okay. So there I went, and when I joined the thing, it was like evening में था course. मैं तो morning में ही गया था to see how it is and all, because I was all excited to know how it is. Like as a theatre course होता पता नहीं था. So 94 when I went there, I thought, यार this is where I belong. क्या कर रहा था इतने दिन. चलो. And you don't believe, हम लोगों का कोर्स स्टार्ट होता था इवनिंग 6 to 9 o'clock. मैं जाता था मॉर्निंग 8:30. जाके पूरे मास्टर्स के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ बात करना, क्या क्या करते हैं भाई साहब. I just got mingled with all of them and I tried to be with them, try to learn the nuances. So for me it was like complete thing for me. Like I was like immersed into that, and my parents used to say, तू आएगा घर आएगा या वहीं रह जाएगा. ऐसा भी होता था कि 3-4 days I never used to go home. वहाँ पर हम लोग रूम नंबर 10 एक होता है, अभी नहीं है. तो ऑल दीज थिंग्स वी यूज्ड टू स्टे देयर, वी यूज्ड टू ईट एंड स्लीप. बिल्कुल सब कुछ थिएटर थिएटर थिएटर. सो दैट्स हाउ द एकेडमिकली आई स्टार्टेड. बट 89 से 91 to 94 we were doing these. Bhai was in ASTI, Administrative Staff College of India. He was working for them also. So they wanted the street plays to be performed. So we had formed a group. That's where I got in touch with my seniors also, Kiran Kumar, and then I don't remember his name. So these guys were my immediate seniors. Then now Professor Bharadwaja, Govind Bharadwaja, then Harish Chandra. They're all my R.R. Harish Chandra garu. They're all my seniors. Megha Ram Krishna. थिएटर में. हाँ थिएटर में अलग. तो ये इसमें से थोड़े लोग हमारे साथ आए स्ट्रीट प्ले करने के लिए पहले से, क्योंकि भाई वाज ऑलरेडी देयर इन सेंट्रल सिटी. सो ही न्यू हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर गुड इन थिएटर. तो हमने एक टीम बना लिया था. दो वी वर नॉट, आई वाज नॉट देयर एंड प्रोफेशनली नॉट इनटू थिएटर. हम लोग थिएटर करना शुरू कर दिए थे ऑलरेडी, बट नॉट नोइंग द न्यूएंसेस एक्चुअली. ऐसा 94 तक ऐसा ही चला. वी यूज्ड टू वर्क विथ एवरीवन, वी यूज्ड टू गो डू स्ट्रीट प्लेज एंड ऑल दैट. उसके बाद में लाइक 94 onwards it was like we started forming a group. It was named Golden Threshold Theatre Group. बट परमिशन नहीं मिली, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ने अथॉरिटीज बोले कि नो इफ यू हैव टू डू इट, इट हैज टू बी डन ओनली इन द यूनिवर्सिटी. इट कैन नॉट गो आउट बिकॉज यू हैव गोल्डन थ्रेशोल्ड का नाम लगा रहे हो. मैंने बोला क्या करें फिर. Then there was this man, the great personality. He's a Kuchipudi exponent. He's a Kuchipudi exponent. He's no more now. So Manikunda Samba Shivaji. तो कोरोना में उनका भी ये हो गया, डेथ हो गया. So he had his team, निशुम्बिता. तो उन्होंने बोला यार मेरा टीम तो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो आपको अगर ये करना है तो we will use this one. That is when Nishumbita was born again. So though it was not उनके साइड से, उन्होंने बोला कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो अगर आपको चलाना है तो आप ये करो. ऐसा हो गया, ठीक है चलो. So 94, mid of 94 and 95 we formed the group formally. Golden Threshold Theatre Group को हटा के then we said let us have Nishumbita. So that's how Nishumbita Ballet and Theatre Group, because dance भी था. Yeah. Because dancers, Nataraj Gopal Murthy is also a dancer. He's also there. So Nataraj, Krishna Mahadev Bhaiya, myself, and Samba Shivaji. So we all got together and we formed this. And KP, Krishna Prasad, and all of them were there. So we formed Nishumbita way back in 94. Now it is 30 years. So that's how the journey started. Like Nishumbita sounds as a Bengali name. Like, could you please? No, Nishumbita is a Sanskrit name. Sanskrit. Yeah. Nishumbita. No problem. Yeah. Nishumbita means victorious. It's a dance pose of Lord Shiva. तो उसके लिए भी एक मिथ है.
शिवाजी बताते थे हमेशा में कि शिव जी और माता पार्वती के बीच में दे यूज्ड टू हैव डांस हैपनिंग एंड दोनों बहुत ही दे वे ऑन पार। शिव जी भी ऐसे थे और माता पार्वती जी भी शी वाज आल्सो ऑन पार। तो नारद मुनि जी लक्काड़ी लगाने के लिए आ जाते हैं, बोलते कि अरे आप तो माँ के हाथ में हार जाओगे तो क्या होगा, आप तो शिव जी है, तो कुछ करो। तो बोले ठीक है क्या करना है, तो आप एक काम करो, आप पैर उठा दो, आप वो जो भंगिमा है वो वैसा ये करके रख दो, तो मैं तो कर नहीं पाएंगे। तो देन ही डज दैट बट देन ही रियलाइजेस इमीडिएटली कि ये गलत है and he realizes his mistake and then together they do that. So us pose ko victorious, that's victorious, so that is known as Nishumbita. That's how it has come. That's how I mean that's a tale actually, like Shivaji ne bataya tha hame, bas we just carrying forward that. Somewhere relatable to Nataraj Murti. Yes, absolutely. Nataraj is the idol for all of us, for all the art forms rather. नटराज जी, लॉर्ड नटराजा इज द आइडल देयर, सो उनके हिसाब से वी गो अहेड एनी आर्ट फॉर्म, थिएटर हो, डांस हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, इट इज नटराज जी whom we worship. That's how it is. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, yes. Tell us about your first play, sir, and how was the experience behind the all process about it? Yeah, I told you ना, Beckett The was my Beckett was very your first play. somewhere हाँ, more उससे elaborate. पहले मैं बताऊंगा आपको, myself and my brother we were very notorious, like mischievous in the sense we were so passionate about doing theater and ये चीज, I think it was 86 or 87, I'm not sure, 86, 85, 86, 87, 18 सालों में कहीं तो भी एक YMCA does have competitions for children, schools वगैरह पूरे participate करते थे। तो हमें इतना जुनून था कि कुछ करना है हमें भी, तो आई डिजाइंड आवर ओन स्कूल फ्लैग, अब दोनों भी डुम्बा हमारे स्कूल, एंड वी टुक अ फ्लैग देयर, इट्स एक्चुअली प्रोसेशन, सो फॉर प्रोसेशन दे वांट अस टू होल्ड द फ्लैग एंड ऑल। देखे तो उलट पलट करके देखे तो हम तीन लोग ही थे, मैं देयर वाज वन मोर गाय हु हैव बंक्ड दिस स्कूल, and there we have done this play as ASS. Yes. लोग सोचेंगे as क्या है, absent minded silly servant. Okay, not in terms of an English not one. yeah, that was the अंग्रेजी वाला catchy as, word. yeah. हाँ, हमने होना बोल के वैसा रखा था, and that's where we did our first play, very first play, way back in, I should say 86, I think 85, 86. And Mono Action I got the first place, Fancy Dress we got the first place, and this one also we got second place. The next day they have sent the certificates, वहाँ हो गया, हम लोग आ गए, घर भी चले गए, किसी को पता भी नहीं था, मैं बोला हो गया चलो। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सर ने बुलाया, वी आर फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स, तो बुलाया, एंड देन आई एम बोले कि आपने कुछ गड़बड़ किया है क्या, तो हमने बोला भाई अब तो लगने वाली है, तो एंड देन दे यूज्ड टू यूज केन, फादर विलियम्स बोल के थे, Which used to केन cane. Okay, okay, हाँ, got it. हाँ, तो केन पकड़ के वो चलते थे, उनको देखते ही पूरे लोग डर के मारे भाग जाने वाले। हम तो सोचे गए काम से, हो गया आज तो हमारा होने वाली पिटाई, तो दोनों गए। आई वॉज इन 7th एंड भैया भैया वॉज इन 9th, तो वेंट इनसाइड एंड उन्होंने बोला, कोई किसी से बात करे थे, कोई पेरेंट, उन्होंने बोले कम इन बोल के बोले, बोले भाई कुछ तो होने वाला है। ओके, यू आर फ्रॉम विच क्लास, मैंने बोला 7th, उसने बोला 9th, ओके यू बोथ आर ब्रदर्स, यस सर, ओके सो वेयर वर यू यस्टरडे, बोल के सर टेल मी वेयर वर यू यस्टरडे, बोले भाई बोलना ही तो है, देख रहे दोनों क्या करें। भैया बोले, ही वाज वेरी लाइक रेवोल्यूशनरी टाइप, हाँ यस वी बंक द स्कूल एंड वी वेंट टू अ कंपटीशन, उसने फट बोल के बोल दिया, मेरी तो फट रही थी, मैं क्या बोले। देन हु मेड द फ्लैग बोल के पूछे, मैंने बोला सर मैंने आई आई हम लोग उठा कर नहीं, यस सर ऐसा वैसा हाथ उठ गया, मैं बोला यस सर, बोले गुड यू हैव डन अ गुड जॉब, बट व्हाई डिड यू बंक द स्कूल, बोले सर वी वांटेड टू पार्टिसिपेट, बोल के भैया फिर से बोले, तो बोले ओह गुड बट दिस इज नॉट डन, बोल के गेंद पकड़े ऐसा, भाई ये तो गिरने वाली है अभी, तो देन ही वाज लाइक he said come come, बोल के
हाथ ऐसे उठा रहे थे दोनों हाथ शेक हो रहा है, तो then उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू हिट यू, बोल के स्टिक लगा दिए, चॉकलेट निकाले। 5 स्टार, वो टाइम में 5 स्टार यानी बड़ा वाला हमारे लिए, 5 स्टार या बिगेस्ट। तो 2 5 स्टार उन्होंने निकाला, बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा ऐसा हो गया, वी वर सो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर बोलेंगे ना। एंड ही सेड यू हैव डन अस प्राउड, बट डोंट डू दिस, नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट एनीथिंग कम टू मी। बोले सर हमारे पास आपने ऐसा बोले बस, वी वर लाइक, देन ही सेड यू हैव गॉट द सर्टिफिकेट, विल बी गिविंग इट देम द असेंबली में देंगे, then the medals and everything were given, and तब से हम लोग हीरो बन गए। Like then after that भाई became the captain बने, मैं भी captain बना। Like in the school होता है ना, like you have the school house captains वगैरह, वैसा वे cultural captain बने। So like that it started. So first play was As, absent-minded silly servant. So and Mona action I got the first play, then इसके लिए भी improv करते थे, वैसा हम लोग करते थे, but focus was not exactly on theatre, because dad was from Air Force, so we wanted to get into Air Force, myself especially. Bhai was a revolutionary, like no, I will do anthropology kiye, like that. That's how it was. So that's about it. Your brother Sri Krishna Mahadev Holagundi was also there in the, like you have also mentioned it, like he was also a huge part in the theatre. He is, even now I don't feel he's gone anywhere, he's there with us. Yeah. So अभी देखो ये पूरा पिंदा ना उसी के है, I don't usually wear all this. Okay. So ये जो है ये उसी के है, and I always feel that he's there with us and he's guiding us. जब भी कुछ हुआ तो मेरे रूम में भी, बेडरूम में भी we have भाई का फोटो वगैरह, मम्मा पापा का है। So I always feel कुछ भी हो जाए, कुछ तो भी आया तो just I stand there and I just pray for 1 minute कि भाई दिखा दो रास्ते, and it believe me, it happens कहीं ना कहीं I feel he's here, he's here and he helps us, guides us। बहुत बार कभी कभार लगता है कि यार ये हो नहीं पाएगा, तो then I think यार कैसा होगा, अगर भैया रहते तो कैसे करेंगे, कैसे ये करेंगे, तो and it happens। So I believe he's still here। So I कभी मैं was कभी लेता नहीं हूँ, I say he's here still। So he was very active, very he is like he used to make all of us so engrossed into theatre। He is the backbone actually बोलने के लिए। So he was the one who told me कि भाई तू ये रास्ता ले ले, तेरे लिए अच्छा है। दो my grandparents दोनों साइड से वो लोग भी ड्रामा करते थे, my grandfathers from both the sides। My dad also was into dramatics and all theatre में। Okay. So he is also very good, बहुत सही करते थे। कन्नड़ा नाट्य रंगा में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वगैरह, यहाँ पर जहाँ पर कुछ काचीगुड़ा में है। So like that, but भाई was like he used to give the guidance कि भाई तू ऐसा कर, ये कर। I used to always get into the direction part वगैरह। So he was my best actor। जब भी मुझे कहीं पर भी लगा कि भाई कोई नहीं है, तो ए राम मैं हूँ ना, I'll come, I am there। So कभी मुझे ऐसा फील होने नहीं दिया कि भाई तू अकेला पड़ गया है, तेरे से नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। Every damn thing he was, and lights, he was such a great lighting technician, I should say। When we were there at Madras for the national festival, हम लोग गए थे youth national youth festival, तो we didn't have all the light because Punjab, Haryana and all, it's a mini India there when it happens, youth festival जब होता है। So all over, all the states they come, and competition बहुत high level पे होता है। हरियाणा पंजाब वाले तो पूरे ट्रॉली भर भर के सेट लेके आते हैं, और हम लोग गए थे सिर्फ ट्रेन में। हमारे पास थैंक्स टू गवर्नमेंट देयर वाज नो सपोर्ट, एंड लास्ट मिनट में दे पुश अस ऑल, एंड जैसे कि चलो 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 72 का बोगी अपना कंपार्टमेंट होता है, उसमें पूरे को भर देते हैं जनरल के जैसा, और बस जो भी सामान है लेके चलो। तो वैसे इसमें भी बिकॉज ही हैड एन आइडिया, तो मैंने बोला भाई मुझे ऐसा लाइट्स चाहिए, कैसे करेंगे। तो देन ही हैड टेकन दिस फैन रेगुलेटर्स लेके उसने डिमर बनाया, डिमर बोर्ड बनाया था, एंड लाइट्स वगैरह। एंड एन वक्त पे वहाँ पर जब चल रहा था, बिकॉज ये कंपटीशन है तो कट थ्रोट रहता है, कट थ्रोट। सो किसी ने होना बोल के तार काट दिया था,
तो वहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास होके वो पावर शॉट मार रहा है, ठक ठक आ रहा था, फिर भी इसने हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि कंप्लीट होना है परफॉर्मेंस. सो इट वाज हिटिंग हिम बट स्टिल ही मेंटेन्ड दैट. That was his commitment towards theatre, and I've learned so much from him. I am really blessed to have a brother like him and a parent like my dad and mom. That's how it is. You have mentioned your father was also into a Yes. Natya. Yeah. Like only Natya or else also into a theatrical dramatical thing. Drama. Oh, Drama. he was dramatist. So Dramatist. लिखते भी थे, and he used to perform. He had performed many a plays and all. So he was the one. बचपन में हम लोगों को ये, he was after his Air Force thing, he joined Indian Airlines as an engineer. तो वहाँ पर इनका बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन वगैरह होता है. तो ही वाज वन लाइक, जाओ एलोकेशन डिबेट है, फैंसी ड्रेस है, जाओ. मम्मा कैसे थे, लाइक हाउस होल्ड, टिपिकल हाउस होल्ड कैसे रहते हैं ना. तो अरे बच्चों को क्या है, आप बिगाड़ दे रहे हो, ये कर रहे हो, उनका एग्जाम्स है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लेट देम गो, लेट देम गो. So we got that freedom right at that age itself. So, and we tried to utilize that, and that's how things have happened. So I would suggest all the parents कि भाई आप जो भी हुनर है उसको let them be encouraged. You should not stop them that. So father was fully supportive to the. Very supportive till the end. Very supportive. Like any kind of no pressure from mother No. and father, like a मदर से था. Okay. बेचारी she's a household wife, and she was a very very warm person. and हम लोग तो क्राइम ट्रेन बोल के उनको नाम लगाया था. हर चीज के लिए रोना, हर चीज के लिए, अगर अच्छा हुआ तो भी रोना, बुरा हुआ तो भी रोना. वे बैक इन 2003, लाइक आई यूज्ड टू डू ऑल दिस. 94 था, स्टार्ट हो गया था, करता था, घर पे नहीं. 2 बार मुझे फूड पॉइजनिंग भी हो गया, बाहर खा के मरते मरते बचा 2 बार. तो शी वाज लाइक पेट्रिफाइड, दिस फेलो डजंट कम, व्हाट आर यू डूइंग, तू आएगा नहीं घर पे, नहीं. 1 हफ्ते तक घर पे नहीं आया था एक बार तो शी यूज्ड टू ऑलवेज क्राई एंड ऑल, एंड शी यूज्ड टू से व्हाट इज दिस, इससे क्या होता है, पेट भरता है क्या, एंड कैसे लाइक गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब. देन इट वाज इंडियन एयरलाइंस वाज अ गवर्नमेंट ये था. तो शी यूज्ड टू से गेट इन, उनके लिए मैं गया था एक्चुअली, वो इसके लिए इंटरव्यू के लिए भी. सो आई वाज डूइंग माय मास्टर्स देन. तो मेरे साइड में नेबर्स है जो, ही वाज अ जनरल मैनेजर, he was there in the selection committee, and my dad was a union leader also. But उन्होंने बोला देखो बेटा, आपको करना है खुद अपने पैरों पे. आई विल नॉट, वो एक बार बोलते कि यार ये मेरा बेटा है, आप देख लो, हो जाता बिकॉज ही हैड दैट मच ऑफ अथॉरिटी. बट ही सेड नो, आई विल नॉट. आप जाओ, आपको करना है, आप जाओ, इंटरव्यू करना है, आप तो एम कर रहे हो, आई यू रियली इंटरेस्ट. मैंने बोला देखो अम्मा तो ऐसा रो रहे, लेट मी गो एंड सी. तो I went there and this gentleman he said, अरे you are बद्रीनाथ जी का बेटा, अरे this guy is so good in theatre वगैरह, अरे आप इसके लिए क्यों आए हो, चलो 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 भगा. That was one and only. So I was actually associated with Confederation of Voluntary Associations. So Sir Anand Raj Verma ji bhi wahan par, he was a very active member then. So Professor Bhaskar Shivalkar ji is my guru, and even Vinay sir के भी गुरु है. So he was the one who introduced me there to Goa. तो वहाँ पर मैंने I started this group, कोशिश theatre group. So it was for all the old city area के बच्चों. तो ये पूरा काम देख के गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया वाले रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड दिए मुझे इन द ईयर 2003. सो तब सुरजीत सिंह बरनाला जी वॉज द गवर्नर. तो ये दिस हैपेंड इन 5 स्टार होटल अपना ताज बंजारा में हुआ था. दैट टाइम मम्मा और पापा पूरे आए थे, तो दे वे मेड टू सिट, रेड कारपेट वेलकम हुआ, आगे बिल्कुल आगे बिठाए थे, सब हुआ था. So that time also she cried. Then she realized what is the power of theatre and what my son is doing. From then it was no looking back. She said, "बेटा जाओ, आपको जो करना जियो," because she understood what it is. Like उनको समझ में आया कि थिएटर क्या है, थिएटर का पावर क्या है. जी. So then she said, "What you're doing is very good, and I am also happy. You go ahead." Oh. That's how I got to convince my mother. But dad was always there. After that it was brother who was like standing like pillars for me. So like your roots comes from family roots.
We are actually Hologundis. Hologundi is a village, very small village from Karnataka. Okay. And my parents, both of them are from Ballari and Bangalore. But we are like, I was born in Karnataka, but 2 महीने के बाद यहीं आ गए थे. So I call myself a proper Hyderabadi. Okay, like your Hindi sounds like exactly North Indian. Okay. So not like exactly not a typical exactly we say we Hyderabad kya kar rahe not like that. Oh, So Nankani, yeah. so your Hindi is like a pure North Indian side kind sounds. Oh, that's good. I don't know. अभी पहले बार आपने बोला है. So I always see we communicate and we do plays in Hindi, English and Telugu. So my first language was Hindi actually in school. So as maybe it has come up. I don't know, but that should be there. And we did have lots of Hindi speaking friends and all. Friend circle में भी था. So maybe that has come up. Anyways. Circling brings Yeah. up the language as well. Correct. Very true. You do lots of like street plays also. Yes. Also, please tell us about street plays and from how you get the permissions doing performing on a street. Okay. So as I told you, 89 to 91 तक I was with Tone Curtains, and from 91 to 94 we were doing lots of street plays. यानी brother was with ASCII, Administrative Staff College of India. So उनके लिए ये family planning के लिए इसके लिए they wanted so street plays for propagation or propaganda. To passage a message. Yes. So we started off from there, and there was no looking back. यानी every time I used to design and I used to write the own script and all. अभी भी मैं ही करता हूँ, scripting वगैरह मैं ही करता हूँ, because street play is a very good medium to communicate, one, and two is open up the actor. So मैं मेरे पास जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं आई टेल देम प्लीज डू अ स्ट्रीट प्ले, बिकॉज यहाँ पर स्टेज पे आने से पहले अगर आपने स्ट्रीट प्ले कर दिया, एक नुक्कड़ नाटक कर दिया, तो आपकी आवाज़ खुल जाएगी, आपका बॉडी लैंग्वेज खुल जाएगा, आपके एक्सप्रेशन बड़े हो जाएंगे, बिकॉज अदरवाइज क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, लाइव ऑडियंस इज वेरी क्लोज, प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज है. जैसे हम दोनों बैठे हैं, इतना ही डिस्टेंस में ऑडियंस होते हैं, एंड आई नीड टू लुक इन टू दोज पीपल्स आइज. तो जैसे करते रहते ना, यू गेट ब्लडी शेकी एंड शिवरिंग हो जाते हैं कभी कभार, अगर इफ यू आर अमेच्योर एक्टर. It's very scary, like ऐसे देखते रहते हैं. एंड especially for the women actors it is even more challenging, because there will be students और कोई भी रहते यूथ, वो लोग सीटी मारते हैं, कोई कमेंट पास कर देते हैं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर कैरेक्टर, यू कैन नॉट कम आउट. एंड उसमें क्या है, एवरी टाइम यू डू मल्टी कैरेक्टर्स. आप पहले सेठ बन गए, फिर आप नौकर बन गए, फिर आप राजा बन गए, फिर एक पॉलिटिशियन बन गए. सो विद इन सेकेंड्स यू कीप चेंजिंग. So it's a very good practical process which will enhance your acting skills. So that is why I recommend all my students to take up a street play. जब भी होता है बोलते नुक्कड़ नाटक करो, क्योंकि आपके सब चीज, like everything in an actor, it develops, it enhances. And we have been doing street plays long time. 30 years हो गया must be. No, beyond that also actually we started 91 92 only. We did street plays then also. So and in Telangana I think our team is very prominent for street plays. We are known for street plays and other things. So we have been with government, against the government, ऐसा बहुत सारी चीजें किए हैं. So that's how the power of street play, I should say. So like it's not just forget about stage fear. Before that, forget about street fear. Yes, absolutely. It's tougher than It's stage very fear. tough, very tough. देखो अभी स्टेज पे भी we have the bifurcation, यानी एक्टर वहाँ पर है, ऑडियंस यहाँ पर है. You will have at least 20 feet और 30 feet का डिस्टेंस होता है. Yes. यहाँ पर हमारा तो इंटीमेट थिएटर है, यहाँ तो 5 फीट भी नहीं है. जी. So I purposely did that because हमारे पास स्पेस नहीं है. एक दूसरी बात है, as an actor you need to be in your own character. How do you focus? वो बहुत मुश्किल है when the actors are very close to the audience. So it's an amazing medium, I should say. Yes. So like you train people personally, like you have also trained Mr. Keshav Deepak and Faria Abdullah. Yeah. Like
How does it feels when you see them in a screen? Oh, that's what I'm saying. It feels really good, and we feel really honored and proud of our own teammates when they make it big. And there are many of them like that who are trying hard. अभी हो रहे हैं वीक्षणम बोल के एक फिल्म आई थी रिसेंटली तेलुगु में. So the anti-hero is our teammate only, Sriram Balaji. So like that, there are many like they are coming up slowly, slowly. Siddhi Khanna बोल के हैं, she's also growing. So she's also into projects and all. डॉक्टर प्रणति बोल के she's done in OTT में किया उसने. Very famous OTT, I don't remember the name. So they are doing it. It feels really good. बहुत अच्छा लगता है जब अपने बंदे वहाँ पर है and when we feel कि अरे यार अपने लोग हैं. And when they come back after a long time, when they come to meet the teammates and all, it's like a family get together type होता है. It is beautiful. It's beautiful. There are no words to praise them, and it's very happy moment altogether. बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो and I hope all the teammates, not only from here, anyone from the art field, like it might be any group, because it's a theater community, and when they are breaking the barriers, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि see, say it or not, it's been controlled by the so called. तो अगर ये लोग बैरियर बना के उसको तोड़ के आगे जा रहे हैं तो it feels really good. बहुत अच्छा लगता है. How does the theater evolved in Hyderabad ever since like you have been over here from the starting Yes, day onwards? yes, absolutely. I should like to speak about this. See, when we were there, when we started '94, when I said there were hardly any teams. Dramatic Circle, DCH, Hyderabad, Tone Curtains. Then Nishumbita was very बच्चा तभी तो 94 में. Then after that सूत्रधार आया, सूत्रधार का भी start हुआ था. There were very few teams. But now I should say 10 years down the line, like 10 साल पहले, अभी 10 साल से देखेंगे तो there are so many theatre groups which have come up, and people are asking for theatre. They are, earlier it was like film करना है तो अरे आप नाटक करते हो, ओ थिएटर वाले हो. अभी कैसा है, अरे हाँ नहीं वो तो था ही नहीं, रेस्पेक्ट नाम का चीज ही नहीं था. लाइक अरे नहीं यार ये बहुत लाउड रहते हैं, इनसे नहीं होगा. बट अभी कैसा है, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है. अभी दे आर लाइक थिएटर पीपल आर इन डिमांड. मुझे डेली एटलीस्ट 4 or 5 कॉल्स आते हैं, या तो दे सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज आस्किंग फॉर थिएटर एक्टर्स. वी नीड थिएटर एक्टर्स बिकॉज नाउ दे नो. बट दिस वाज नॉट द सिनेरियो इन नॉर्थ में बिल्कुल. Like from the start it was like if you are from theater you have a amazing respect there, and you are invited for the performances or for any kind of shoot or वगैरह. बट यहाँ पर वैसा नहीं, तेलंगाना आंध्रा में था ही नहीं. बट नाउ इट इज डेवलप्ड thanks to all the theatre groups. It is developed like anything, and it is developing. Theatre is happening and live. लोग बोलते हैं ना कि there are people who say we are revivalist of theatre and all. I don't want to take the name, but people know that very clearly who I'm talking about. Okay, so we are no revivalists. I'll tell who are we to revive theatre, because it's an art form which will not die. आप आपका जन्म से पहले था, आपके जन्म के बाद है, आपके डेथ के बाद भी रहेगा. सही है सर. आर्ट फॉर्म विल नेवर डाई. वी विल डाई. ओके फाइन. अभी देखो दे विल चैनलाइज, दे विल टेक डिफरेंट शेप्स. लाइक पानी के जैसा, पानी आप बाउल में डालो, बाउल का शेप आ जाएगा. लाइक दैट कोरोना के टाइम पे इट बिकेम ऑनलाइन. नेवर एक्सपेक्टेड कि थिएटर विल बी ऑनलाइन. So मैं तो लेता ही नहीं हूँ. I said boss I am not going to do this. But still there were classes which I was supposed to take. So we did, and it did really happen well. Online digital classes हुए, अच्छा हो गया. So it took a shape. Then again it went offline हो गया. So we cannot do anything to theatre. Only thing we can do is we can develop it. We can try different channels and different versions. That's it. All the art forms are going to live, and theatre, because it's a three-dimensional thing, it is definitely going to enhance and live long after. Your play being was received good and by audiences as well. How was the experience of handling the big star
and like specifically cast. You hand Yes, over the yes. specific casts. Yes. So thanks again to all my teammates, I should say, especially in Nishumbita School of Drama के जो भी कलाकार है, I would like to thank all of them for their commitment and passion. See, ऐसा है कि it's not a regular thing. Like for them, they have different fields. Someone is a doctor, someone is a software engineer, someone is working as something else, but they given their time. और सभी लोग आते हैं and for Macbeth I had I think almost 40 plus लोग थे 50 लोग. Then I had done Agnivarsham where I had again 50 plus cast and when we had to go, we had to cut down because we were invited by National School of Drama, Bharatran Mahotsav. So we had to cut down. And when we performed in Kashmir, I'm telling you, 445 or 435 people were there. All of them, like these guys, हम लोग half naked अग्निवर्षा में like they are all Brahmins, Brahmin community होता है and then the other community होता है, that's the rift happening there. So after the performance 2 hours 20 minutes का कुछ performance है होने के बाद for 5 minutes everyone gave a standing ovation. Kashmir में 6:15 6:30 it is deserted, no one is on the roads, but 435 people stayed back, looked, and after the thing interactive session होता है, the director the actors are all, सभी लोगों ने एक ही पूछा, भाई साहब आप लोग इतने ठंडे में, हम लोग इतने 4 5 6 पहन के बैठे हैं यहाँ पर, ग्लव्स वगैरह सब पहन के बैठे हैं, आप लोग तेलंगाना से हैदराबाद से आप आए हो और आप हाफ नेकेड यानी विदाउट एनीथिंग, हाउ कुड यू ऑल डू इट? सो हमारे बच्चों ने और हमने एक ही बोला कि बस दिस इज द मैजिक ऑफ थिएटर. Definitely, sir. दिस इज द मैजिक ऑफ थिएटर. किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा रहेगा, इतना ठंड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट में थे हम लोग बिकॉज इट वॉज इन द मंथ ऑफ जैन एंड एंड फेब 7th और 8th को हमने किया था वहाँ पर. सो फ्रीजिंग पॉइंट में है वहाँ पर, बट हमारे लोग आराम से कर लिए. सो आई सेड बॉस नथिंग बट दिस इज द मैजिक ऑफ थिएटर. थिएटर कीप्स अस टू डू एनीथिंग. इतना पावर आता है सिर्फ थिएटर से. The emotion connected over. Yes, absolutely. And they were so happy. They said, we haven't watched someone so emotionally attached to theatre. So हमने बोला thank you. Okay. Nishumbita also started like late Girish Karnada plays. Yes, like Girish Karnad ji. yeah, so like you have adapted it in a Telugu format also, right? So like some non-speaking Telugu people were also participated in that. Like Yes, how yes. was it and the overall process? देखो अभी that's what I keep telling all my teammates and interns. There are people who come from North India also. Interns आते हैं, then Christ College से भी आते हैं. There were foreigners from US who had come as interns for our team. अभी भी होता है. They are कौन सी की college है? They are like collaborating with us. So every summer में वैसा आ जाते हैं. I tell them कि see language is never a barrier. अगर आप सोचे कि ये भाई ये मुश्किल है तो मुश्किल है. Definitely. अगर आपने माइंड से निकाल दिया एंड यू से कि बॉस दिस इज नथिंग आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली. द अदर डे सुधीर बाबू's फिल्म मा नाना सुपर हीरो, Sudhir Babu's film. The heroine I had trained her. She's from Mumbai, so she had come. 2 months she was there at Vimanta में थी वो, and regularly she used to come. उसको तेलुगु का टीवी नहीं आता है, but she could speak so fluently. Everything she used to write down. So that shows the dedication. अगर आपको कुछ करना है तो आप जुड़ जाओ, बस जस्ट डाइव करो और सोचो मत आगे बेचारी ये कैसा होगा वैसा कैसा. इतने सारे लगाएंगे ना तो कुछ होगा ही नहीं. सही. और टाइम भी ऐसे निकल जाएगा. So just if you have the guts, then yes, I'm going to do it. That's it. Get in. So there were many of them who were non-Telugu speaking, but they could do it. आराम से कर लिया सभी लोगों ने. रिसेंटली हमने कौन सा नागामंडला किया था, तो they could do it because they were Hindi speaking people who could speak fluently in Telugu. आराम से उन्होंने बात कर लिया, उनको हमने ट्रेन किया. जो सपोर्ट टीम रहता है तो they also work on it because every time I am not there. So my team, that's what I keep telling, thanks to my teammates,
they make it happen. एक से होता नहीं है. Group work, It is teamwork. group work. It's a teamwork which happens always. Nishumbita also has an indoor auditorium, Mm-mm. right? And how did it get ideas to be build this one? See, this is a vision which my brother, myself, and we both actually have thought about it. Like teammates to the, but this was our vision. Ki, when this place where you are sitting, this is the intimate hall now, intimate auditorium. इसके बारे में हमने 20 साल पहले ही सोचा, 25 years actually to be, now it is 30 years. तो तब से हमने सोचा कि कुछ करना, ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास, because we have been struggling to get a space. तो we have practiced on roads. 3:30-4 बजे को हम रोड पे किए हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस कहीं पर कोई देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कहीं पर स्पेस है. सो वी सेड यार कुछ भी हो जाए हम लोग स्पेस बनाएंगे और वी विल गिव इट टू पीपल so that those who are suffering they do not suffer, because we have undergone that. तो हम लोग we have gone through all these things. तो INT, Indian National Theatre, I don't think so it is there anymore now. वहाँ पर थोड़ा छोटा सा स्पेस था, बट वो लोग भी दे सेड मॉर्निंग में 5 o'clock को आके बाय 6:30 यू शुड फिनिश. तो आवाज़ निकाले तो साइड में जो भी थे वो लोग पूरे आ गए. All people started shouting. They were ready to hit us also. They hit us also actually. We got hit also. So then we were going through all these problems. So then when भैया के साथ बैठ के हमने बात किया, हम बोले कि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे हम लोग लगा देते हैं. And because myself, भाई and my sister, we three were there. So after मम्मी पापा का ये होने के बाद then we thought यार ये स्पेस, it was single story, and उसके ऊपर हमने शेड लगाया था, and it was like 60x40 बड़ा वाला स्पेस, and it was all open. फिर 2-3 बार पुलिस स्टेशन आराम से जाके बैठ के भी आया हूँ. तो they picked me up. भाई was like how dare you, वो पुलिस से भी भिड़ गया था, बोला कि कैसे लेके जाते हो मेरे भाई को, हाउ कैन यू टेक हिम, हाउ कैन यू टच हिम, बोल गए. ही यूज्ड टू स्पीक लॉ. एंड मैंने बोला भाई कुछ नहीं, नहीं बैठो बोले. मैं बोला ठीक है बैठ रहा हूँ, आप कुछ ये नहीं करना, भाई को टच नहीं करना. बट ही वाज लाइक नथिंग डू, यू आर नॉट गोइंग, यू सिट हियर, हाउ विल दे टेक यू विदाउट एनी वारंट. बोले नहीं नहीं हम लोग जस्ट ऐसे क्वेश्चन करने के लिए. सो ऐसा बहुत बार हुआ. 3 times आई थिंक, 3 or 4 times आई गॉन, कंप्लेंट दे दिए थे. तो आई हैड गॉन टू द पुलिस स्टेशन, बैठ के आराम से उनके साथ हाय हेलो करके बोले कि नेक्स्ट टाइम करेगा तो तेरे को पड़ेंगे डंडे. उन्होंने बोला भाई ये तो मेरा प्रोफेशन है, व्हाट डू आई डू नाउ. A small session in a police station. Police station. So then they said see if you have to do it, you do it inside. आपके घर के अंदर करो पर बाहर नहीं करना है. तो ऐसे भी घर के अंदर भी हमने किया है प्रैक्टिस, घर के अंदर, हमारे पेरेंट्स पूरे बाहर, हमने ऐसा भी प्रैक्टिस किया है, उन्होंने वैसा भी हेल्प किया है. So then slowly this came into our mind. Unfortunately when this was happening, bhai passed away 2011. So then we had to wait 2013 तक, कोई नहीं था, लोन वगैरह लिए हम लोग. धीरे धीरे जो भी पैसे मैंने थिएटर के ज़रिए कमाए थे वो पूरा पिचिंग करके, दिस वाज अ प्लान, लाइक ऐसा कुछ करना है which will be helpful for everyone. So this was Bai's vision and my vision, so I thought we'll do it. And that's how 2018 के बाद 19 में this happened and corona आ गया था. तो I was actually sharing this with Rishabh also. There were nobody to help me put up all these things, acoustic वगैरह. तो couple of my teammates were there, but they also had to leave to the villages and all. So I did it all alone, and this is where we have the space. All good to have a space. Like even we are able to noise cancellation mode. Yes, absolutely. You have been also a gold medalist during your masters, and from Central University of Hyderabad, and had helped you in a theater journey, sir, during that period. Absolutely, that's what I said. See, my 94 when I started my PG diploma in acting, postgraduate diploma in acting, 1 year course, I used to go in the morning itself. I used to be with the MA students. I used to like they used to think this fellow is also an MA student. ऐसा मैं उनके साथ उतना घुल मिल गया था. So that has helped me a lot. The academic जो सीखा मैंने या मुझे उन्होंने जो भी मुझे इनपुट्स दी है, प्रोफेसर चाटला श्रीरामुलु गारू, प्रोफेसर भास्कर शिवलकर जी,
Professor D.S.N. Murthy garu, Professor N.J. Bhikshu. All these people have, दो नॉट लिटरली ऐसा करो उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, बट जो इनपुट्स उन्होंने दिया है, जो एडवाइजेस उन्होंने दिया है, जो क्लासेस उन्हें हमें बताया उन्होंने, दोज आर सो हेल्पफुल. इवन स्पेशली प्रोफेसर डी.एस.एन. मूर्ति सर्स नोट्स डायरेक्शन के लिए अभी भी है मेरे पास, 94 के 94 95 97 अभी भी आई हैव देम, बिकॉज वो बोलते रहते तो आई कैन ईजिली विजुअलाइज थिंग्स, उतना ब्यूटीफुली बोलते हैं. सो आई यूज्ड टू नोट डाउन व्हेन ही यूज्ड टू से, वो नोट्स देते हैं बाद में. He used to say, Ram, don't write what I'm saying, I'll give you notes. I said, no sir, something I might miss, so I don't want to miss anything what you say. इसीलिए मैं क्या करता, ठीक है उनको सुन रहा हूँ तो मैं लिखते रहता हूँ ऐसा. So maybe there might be something going wrong, but still एक दो बार then he left me that रास को ना. So that's how it is. So I have learnt a lot, especially watching these professors perform, how they make things happen, how they visualize things, how do we visualize things on a bigger level, very big level. So ये चीज़ें मैंने बहुत सीखा है उनसे. So I am very indebted to all my gurus, especially my first guru, my dad, and my brother. I cannot forget them. I will never forget them. But after that, yes, academic gurus, these people have supported me, helped me, and even now they are doing it. Though Chata sir is no more, Bhaskar sir is no more, but DSN sir and Bhikshu sir बहुत help करते हैं. They are always there. Anything if I find, we do argue a lot. अगर performance हो गया, then after that we have an interact. We like sir and मैं हम लोग बैठ के बात करते हैं. सर बोलते ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था. मैं बोला क्यों अच्छा नहीं था, आपको क्यों अच्छा नहीं लगा. So yes absolutely. Then we never used to. तब तो हम लोग की फटती थी डीएसएन सर वगैरह. अभी क्या है ना, थोड़ा लेवल आ गया है ना, तो we क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है. And now, and he is also mellowed down. Earlier he used to be very aggressive, so he is also mellowed down, and we have a beautiful talk and all. फोन पे भी वो एक एक बार स्टार्ट हो गए तो ये 1.5 hours चले जाता है ऐसे. So that advice helps us a lot, because it's a learning process. Any time, any art form, especially theatre, it's a learning process. Even now I learn from my students. There is no perfection. No. आप सोचे कि हमें सब आ गया और बोला कि मुझे सब आता है, खत्म हो गया. End of the chapter begins over there. बंद हो गया, अंदर चले गए, मुर्दे बन गए. So never ever think that I know everything. You are learning, you keep learning till the end. I love doing things. That is why we do a lot of physical theatre. Physical theatre यहाँ पर तेलंगाना में कोई ज़्यादा नहीं करते हैं, but we love doing physical theatre. We love doing street play. We love doing experimental theatre. क्योंकि these are the things which the future generation should know. नॉर्मली बैठ के बात किए, परफॉर्मेंस किए, कॉमेडी कर दिए, हो जाएगा नहीं. अगर आप कुछ और करेंगे, then only you can attract the audience, attract the people. So that is why we keep trying different things. Different genre, like different things would be included. Yes, absolutely. That will help people. You teach theatre at multi institutes. Yes. So do you think theatre will help into children's like to evolve in which and what criteria specifically? See, we do lots of. I've been into children's theatre since last almost 30 years now. So it is basically, I tell them ki look beta, if you, I'm not asking you to become an actor, or I'm not asking you to be something like a dramatist or something, you take up theatre. No, it is for your personality development. बच्चों के लिए, when you have some creative activity that will enhance their skills, one, and stress burst. आप कोई भी आर्ट फॉर्म ले लो, इफ यू आर पेंटिंग, इफ यू आर डूइंग ड्रम्स, और इफ यू आर हैविंग म्यूजिक, ये ना स्ट्रेस बस्टर्स है. इतने टेंशन में रहते बच्चे आजकल, क्योंकि इट्स बिकम अ रैट रेस. आई हैव डन दिस प्ले, आई हैव रिटन अ प्ले, मिट्टी के खिलौने. So it's all about this education system, especially in India, which is forcing, pressurizing the kids to commit suicide. वो लेवल तक चले जा रहा है. हम बोलते हैं एज पेरेंट्स कि नहीं यार हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बच्चे को छोड़ दिए, बट जैसे ही मार्क्स हाथ में आए तो शुरू हो जाता है पूरा रावण बाहर आ जाता है. तब तक राम बन के बैठे सो रहते हैं. So that is why I keep telling them, I start talking to even the parents who are really
Like there are kids who are excellent, very creative, very excellent, but चांस नहीं मिलता है. बोलते हैं भाई ड्रामा करके क्या करोगे, ड्रामा करके क्या होना है तुम्हारा. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है. You see a kid who is being trained in dramatics and a kid who is not being trained in dramatics, 2 साल आप देखो, 2 साल में इसका चेंजेस और इसका चेंजेस क्या है. You'll see a world of difference. सेम क्लास वाले बच्चे, दो बच्चों को लेके आप करके देखो, बिकॉज आई हैव सीन, दिस इज माई थ्रू माई एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग यू सी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बच्चे में नहीं रहेगा. वो जो सोचता है क्रिएटिवली, जो सोचता है ये बच्चे में नहीं रहेगा. जो इमेजिनेटिव स्किल्स होते हैं ये बच्चे में नहीं रहेगा. और जो वॉइस, जो वाचिक अभिनय जो होता है, जो बात कर सकता है, जो बुलंदी से बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता. He might be very good in academics. He might be a topper. But when facing these two are going to an interview, this boy has a chance, or this kid or this girl has a 100% chance of getting through rather than this kid. ये होती है थिएटर. इसीलिए चिल्ड्रंस थिएटर इज अ मस्ट. एंड आई से, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो मेनी अ टाइम्स कि प्लीज इंट्रोड्यूस थिएटर ऑल्सो इन टू ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो. बिकॉज अभी आप मास्टर्स करके बाहर निकल रहे हो तेलुगु यूनिवर्सिटी से, OU से, या तो HU से, आंध्रा यूनिवर्सिटी से, but there is no channelizing. That is why most of the theater people are getting into films. If you have a channelization, and if these kids are nurtured in the early stages, abhi through government you have dance, you have music, you don't have theater, you have even singing also. Singing hai, dance hai, yeah, you don't have theater. So if they can involve theater also as a syllabus, then things will be like Nishumbita entered India, like India Book of Records, right? And for performing 27 plays. yes. Also, could you please provide us some more detail about this? Oh my, it's an enormous thing actually. And again, thanks to my team. Otherwise, I wouldn't have done anything. I wouldn't have even thought of something of that sort. I thought I say, we're just discussing because we had this festival Natotsav, which every year we keep doing. For 2015, we started this. So, and Amla Kinini was the brand ambassador then. तो तब से हम लोग करते आ रहे. तो देन वी थॉट, मुझे ना ये कीड़ा जो है ना बहुत ये करता है कि यार डू समथिंग न्यू, कुछ तो भी अलग करते हैं. देन आई वाज गोइंग थ्रू एंड व्हेन आई वाज डूइंग, अरे इतने सारे, देन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई वाज राइटिंग, एंड देन सडनली इट स्टक मी, व्हाई नॉट वी डू समथिंग लाइक दिस. देन माय टीम वाज, अरे सर करते हैं करते हैं. देन इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट. हमने सोचा नहीं था कि हम कुछ ऐसे करेंगे. इट वाज देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि यार चलो कैसे करना, क्या करना, क्या करना. आई वाज थिंकिंग. देन वी सेड यार लेट्स डू इट फॉर 24 आवर्स. 24 आवर्स हम लोग करते हैं. आज तक किसी ने किया नहीं है. विल ट्राई इट फॉर 24 आवर्स. होता है तो ठीक है, नहीं होता है ठीक है. तो देन दे सेड 24 आवर्स में 24 प्लेस करते हैं. देन आई सेड सी व्हाट इज द मैजिक. अगर 24 आवर्स में 24 प्लेस कर रहे तो ठीक है, और ज़्यादा अगर हम कर सकते हैं, if we can in that stipulated time, then that is a challenge for us. I said sir हो जाएगा. हाँ हो जाएगा, आप लोग है ना. सही है. So then we started off, and morning 7 we started, and next day 6:45 we winded up, I think. So by then it was, the record was already done. So Asia Book of Records and India Book of Records, we hold the records for the maximum number of performances in a day, by a single director, by a single team, and in single space. Yeah. So that's how it is. Then we did 2 days 22 plays also, though we didn't go for any record as such. Though दिन में 22 plays, all the 22 plays were written by me only. So वो भी किया है ऐसे भी. सही है सर. Like at a time, all the plays were performed. Yes, and actually, according to Guinness Book of Records, these guys they can take a break. 5 minute का they give a break after every performance. You can take a break of 5 minutes. But believe me, my team did not even take a break. ऐसा ही किया हमने. एक्चुअली देखे तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड रिकॉर्ड. बट गिनीज बुक उन्होंने बोला कि सर आपका बहुत क्रिएटिव है, बट वी डू नॉट हैव अ कैटेगरी लाइक दिस. दे सेड इफ यू कैन डू समथिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, उनका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से करने के लिए बोला. मैंने बोला भाई होता नहीं, अभी हमारा जो हो गया है.
Like it's a perfect, we can say perfect nasha to have. Yes, absolutely. Like instead of having some other nashas, this would be a better thing. It It is, it nurtures is. whole personality. We are addicted, boss. Theatre addicts. Let's recall your struggling days, sir. And like, when did you have any money to follow your passion? See, this is another catchy point you have asked me, I should say. Now, see, money, they go earlier days, as I told you, we did not have. I had a BSc SLR. उसी के ऊपर हम लोग दो लोग जाते थे, मैं और मेरा दोस्त कृष्ण प्रसाद, Cycle. हाँ साइकिल पे. So slowly it started building. So when people see how dedicated, how passionate, and how good you are, how disciplined you are towards theater and training people towards theater, like as I said, my senior before me joining the PG diploma, he introduced me to a school, Roots High School, Roots Montessori, that was in Bandara Hills. So he could not take up the project because वो busy थे. तो he said, राम तू help कर लेना. तो उन्होंने देखा पूरा annual day का मैंने ये किया. So those people said, you please join our school, and this will be like an activity. Drama, we would like to introduce drama as an activity. 94 में. So they said आप सिखाना कीजिए and we will pay you 150 rupees per week. We can say is it a first salary of First your salary, yeah. So 600 rupees per month I used to get. तो वहाँ से शुरू होके पूरा दिन सिखाना है 150 रुपीज़. एंड वहाँ से शुरू होके अभी कैसा है बोले तो 1 hour दे पे मी अराउंड 20K मिनिमम वो होता है. सो दैट्स हाउ आई हैव बिल्ट माई सेल्फ अप. एंड लोग बोलते थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में स्ट्रगल. यस एब्सोल्युटली, वेयर देयर इज नो स्ट्रगल यू टेल मी, एनी फील्ड यू टेल मी देयर इज नो स्ट्रगल. each and every field has a struggle. तो स्ट्रगल तो रहेगा ही. ये ना नाम के वास्ते ऐसे बोल देते हैं. तो इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर पैशनेट एंड इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इट विल हैपन एंड यू कैन अर्न. थिएटर में बहुत पैसा है. पीपल डोंट नो हाउ टू चैनलाइज. इफ़ यू कैन डू इट, वेल एंड गुड. अभी ये जो भी बिल्डिंग मैंने बांधा है या जो भी ऑडिटोरियम बांधा है, ये थिएटर के पैसे से. Nothing. I had, my dad didn't give me anything. We had the house, that's it. Otherwise we are all simple normal family वाले हैं हम लोग, middle class family. So from there we have come to this level only because of theatre. थिएटर में मैंने बिलीव किया है, बिलीव करते रहूँगा मरते दम तक. एंड दिस विल हेल्प यू इन एनी काइंड. बस आप जो कर रहे हैं ना उसमें अपना जुनून दिखाओ और आप लगे रहो. दैट विल हैपन. You don't have to worry about anything. Earning from a theater from in other specifically theater rich states, that would be a different thing. Yes, like absolutely. Earning over here, it's a huge like it's a biggest thing you have ever built it. It's a Yes. And देखो अभी क्या है ना, अगर आपका सपना साकार हो जाता तो उससे ज़्यादा चाहिए नहीं. सही. हमारा एक सपना साकार हो गया है कि वी थॉट अबाउट दिस, माई सेल्फ एंड माई ब्रदर, वी विजुअलाइज दिस कि एक हमारा एक ऑडियो होना चाहिए जहाँ पर लोगों को लेके आए, हम कराए. तो हो गया. वो मुझे हाथ दे दिया, जल्दी चले गया. But definitely, yeah, he is there with us always, and it has happened with all the blessings of all the theatre people, especially my family members and my theatre family. as a theater person, what are the most valuable skills for an acting career? Valuable skills for an acting Career. See, I would say first and foremost thing is you need to believe in yourself. One. Two is, that is what I tell my son also. I have named him Madhav along with my brother's name. So I tell him also, and we both have the same case wala ye, never give up. So never ever give up. होता है यार, there ups and downs अगर नहीं है तो life क्या है? If I don't know what is sadness, how will I know what is happiness? Right. If I know sadness, then only I know, oh, this is happiness. अगर मैं सिर्फ खुशी में ही जिया हूँ तो हैप्पीनेस देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, बाद में सैडनेस सडनली देगा तो मैं मर जाऊंगा. आई विल नॉट स्टे. सो द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ शुड बी देयर, एंड थिएटर टीचेस ऑल दिस. थिएटर इज लाइफ एंड लाइफ, सो इट टीचेस अस ऑल ऑफ दिस. सो आई वुड से आप कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर कैरेक्टर यू आर गिवन,
even it is for 2 minutes or for 2 hours. Just जी जान लगा दो. You should involve yourself, get in there, and never ever think कि यार 10 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं. Leave us and all that. That's all bullshit. और लोग बोलेंगे अगर फर्स्ट फिल्म फ्लॉप हो गया, सेकंड फिल्म फ्लॉप हो गया, पीपल विल से फर्स्ट एक्ट फ्लॉप हो गया, ड्रामा करते करते गिर गए, भूल गए. Things will happen. Don't worry. Keep doing, keep doing, keep doing. Then only you can perfect the art form. You can at least get towards the perfection. So and be disciplined. Be disciplined. You have to. Punctuality एक चीज होती है. You need to be there. Whatever it is, come what may, I should be there. Plan करो. Everything has to be scheduled and go accordingly. No stopping you. That's what I would say to anyone. What is more important for an actor? Like you have already mentioned, training in terms of training on specific points. Yeah, that's what I'm saying. The first thing I would say is believe in yourself and don't lie to yourself. यानी एज एन एक्टर आई ऑल्सो एट टाइम अरे यार जाने दे यार डुम्मा मार देंगे बोल देंगे मेरा तबीयत ठीक नहीं है. गलत है. आप अपने आप को लगेगा ठीक है वो बोलेंगे ठीक है जाने दो ओके 2 दिन चले गए तो 2 दिन तो गए आपके ही गए उनका कुछ नहीं जाने वाला वहाँ पर. So be as truthful, as sincere as possible. Be disciplined and work. There's no shortcut. Any art form there is no shortcut. आपको काम करना ही है तो करना है. अगर एक दिया मैंने एक टास्क दिया तो आप 3 टास्क करो. आप करके आओ. Then you'll make the person who's sitting there also happy. You will also be happy and you're learning something new. And it's a learning process day in day out. Keep learning from everyone. बच्चे से लेके बड़ों तक आप सीख सकते हो. तो सीखते रहो. कभी मत बोला कि यार मैं एक्टर बन गया हूँ. एक्टर बनेंगे बस बनते रहेंगे. सही है सर. सर कोई स्पेसिफिक जैसे कि आपके फादर एयरफोर्स में, हाँ. क्या कोई हेल्थ कॉन्शियस रिलेटेड या मॉर्निंग ऐसा कोई एक्टिविटी होता था जिसे आपको फॉलो करना होता था सभी को? No, we come from a Brahmin family. So जब हम लोग का ये हो गया था लाइक जनेब संस्कार होता है ना जी. सो थ्रेड सेरेमनी तो उसके बाद में तो मॉर्निंग्स वी डू संध्यावन अर्ली मॉर्निंग 4:35 o'clock we used to do. So all the rituals which we follow in a Brahmin family we used to follow all that. And I am into even now करता हूँ मैं sports also. So I used to play cricket. I have represented state level. तो फुटबॉल क्रिकेट ये दोनों खेला है. खो खो का कैप्टन था मैं. सो ऐसा सो दिस हैज केप्ट अस फिट ऑलवेज. इट हैज केप्ट अस गोइंग. सो डैड ऑलवेज नाना ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेटा जो भी है ना आप शिद्दत से करो बस. उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला. एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल अस वॉट एवर इट इज कम वॉट में स्टैंड फर्मली. अगर किसी ने बोला कि तू झूठ बोल रहा है ये कर रहा है तेरे ऊपर कुछ भी बोले allegations है you stand firmly. If you are truthful stand, otherwise you apologize immediately. बोलो सॉरी कान पकड़ो उनके पैर पकड़ो जो भी है बट स्टैंड ऐसा ही स्टैंड करो. ये एक चीज उन्होंने बोला. और दूसरा है कुछ भी हो जाए you do things on your own. Never ever depend on anyone. सेल्फ डिपेंडेंट. Yes. Never ever depend. क्योंकि ठीक है कभी आदमी के पास टाइम है तो आपको सपोर्ट कर देंगे हेल्प करेंगे बट अलावा क्या करेंगे. यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट. डू थिंग्स ऑन योर ओन एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स परफेक्शन. ये चीज. How do you respond to a negative and positive feedbacks? And what was the specific feedback you remember still today? हाँ. So I'll talk about this way back in 96 I think. 1996 97 we had this major production. MA जब करते हैं ना तो major production we need to stage a performance. तो प्रोफेसर DSN मूर्ति सर इज आर डायरेक्टर. डायरेक्शन पेपर के लिए वो इंचार्ज है. तो तभी हम लोगों ने एवरी ईयर वी यूज्ड टू डू दिस लाइक फेस्टिवल थिएटर फेस्टिवल करते थे वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सरजिन नायडू. तो फेस्टिवल में हर एक का प्ले रहता है जो भी स्टूडेंट्स हैं. हम लोग 11 ऑफ अस में थे. राजीव कनकाला इज माई टीममेट बैचमेट ब्रदर. तो सबका एक प्ले होता है. तो सर ने भी उनका चाऊ बोल के एक प्ले है जो उन्होंने करवाया था स्टार्टिंग में इनिशियल
यानी इनॉग्रल प्ले वाज सर प्ले, उसके बाद में स्टूडेंट प्रोडक्शंस। तो सर का प्ले हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। देन 2 3 4, फिफ्थ वाज माय, फोर्थ और फिफ्थ प्ले वाज माइन। तो अनलकी और लकी बोलो, कुछ भी बोलो, तो सर को फिर से एक ये आया कि डिमांड आया कि आपका प्ले फिर से कीजिए। एंड एक प्ले और एक प्ले के बीच में 2 दिन का गैप रहता था। तो उसके हिसाब से मैंने 2.5 मंथ से मैंने पूरा प्लान किया था मेरा कैसा सेट रहेगा, क्या रहेगा। इट वॉज माई फर्स्ट मेजर प्रोडक्शन, यानी एम ए सेकेंड ईयर फाइनल ईयर होने वाला था, फोर्थ सेम का है। तो मैं 2 महीने से पूरा प्लान करके सेट ऐसा रहेगा, ऐसा मेरा डबल सेट था, एक सेट और उसके ऊपर और एक सेट। तो वहां पर भी एक्टिंग होता है, यहाँ पर भी एक्टिंग होता है, तो चढ़ के ऊपर जाना है वैसा रहता है। तो पूरा प्लानिंग हो गया था। तो ये आ गया, सर ने बोला देखो 9th 10th 11th 12th को मेरा प्ले, 10th 11th। तो अभी क्या हो गया, सर ने बोला 11th को प्ले करना है। मैंने बोला सर मेरा प्ले है 12th को और मेरा तो बड़ा सेट है। बोले नो राम डोंट वरी, देखो मुझे आपके बारे में पता है, आई नो हाउ गुड यू आर, एंड आपका सेट वगैरह मुझे पता है, डोंट यू डोंट हैव टू पुट अप अ हैवी सेट एंड ऑल। उससे पहले ही मेरा लड़ाई भी हो गया था विद द डिपार्टमेंट, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी रेबेलियस। मैंने बोला कि देखो भाई, आप वो लोग दे गिव मनी, अभी एनएसडी का एक प्रोडक्शन, स्टूडेंट प्रोडक्शन को दे गिव इन लैक्स, लाखों में देते हैं, 6 लाख 7 लाख। हमारे पास कितना गेस करो, 400 रुपये। हाँ। मैं 2000 सोच रहा था सर, एटलीस्ट 2000। नहीं, 400 वॉज द थिंग। फाइनली दे सेड 800 देंगे चाहिए तो मैंने बोला नहीं, आप मुझे कुछ भी मत दो, मैं मेरा ओन पैसा, बिकॉज आई टू डू ये मम्मा को ये सपोर्ट करने के लिए, आई टू डू कैजुअल लेबर के जैसे एयरलाइंस में। तो रात में आके यहाँ पर लेबर करता था, फिर वहाँ जाके परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करता था। तो मैंने बोला देखो सर, आप पैसे मुझे मत दो, मैं खुद ही पैसे लगा लूँगा, आई विल पुट माई ओन मनी, बट यू गिव मी। तो तभी वो लड़ाई हो गया था, वो बोले कि तेरी मर्जी, जो भी करना है कर ले बोल के। अभी क्या हो गया, 11 तारीख को सर का आ गया, 12 को मेरा है। तो सर ने बोला हाँ, आप इतना बड़ा सेट डालने की ज़रूरत नहीं, पहले भी आपको बोल चुका हूँ मैं। मैंने बोला नहीं सर, मुझे तो सेट डालना ही है। बोले योर विश, आई एम द इंचार्ज बोल के उन्होंने बोला। सर फाइन सर। 11th को रात के 9 बजे तक सर का परफॉर्मेंस हो गया, पूरे लोग ऑडियंस जाने में 9:30 हो गया। तो बाय द टाइम पीपल एट एंड केम बैक, इट वॉज 10 o'clock, 10:30। तो मेरा तो डबल सेट है, पूरा डालना है। तो ऐसे कैसे करेंगे, दे वर 2 3 पीपल, वी वर शॉर्ट ऑफ सब सेट करने के लिए। देन यू डोंट बिलीव दिस फेलो राजीव कंकला आ गया, बोला ओए राम चल मैं भी करता हूँ तेरा। मैं अबे तू कैसे आ गया? बोला नहीं यार, तेरे लिए तो इतना तो करे पड़े। 6:30 was the time to start the play, 12th को। 6:32 I started, 2 मिनट लेट। ओके, हो गया परफॉर्मेंस, हो गया, सब हो गया। तो वाइवा होता है परफॉर्मेंस के बाद, नेक्स्ट डे दे कॉल अस फॉर द वाइवा, आस्क कि क्या क्या हुआ। तो देन सर ने बोला, डीएसएन सर है मेरे, तो भास्कर सर, डीएसएन सर, सभी लोग बैठे हैं। तो देन दे सेड यू स्टार्टेड लेट। तो मैंने बोला सर यस आई नो, 2 मिनट्स लेट, 2 मिनट्स लेट। हाँ सर। देन उसके बाद में everything, I told you not to put that much of heavy set, why did you put heavy set? That sir, this was my dream, so I had thought about it. So what, do you need so much of heavy set, इतना पूरा ये करके you delayed the audience by 2 minutes बोल के फिर से वहाँ लिखे, I'm very sorry for that sir बोल के बोले, and you use negative movement बोल के बोले। I said what sir, लाइक यू हैव शोन बैक टू द ऑडियंस बोल के बोले। तो एक सीन में कैसा होता है कि देयर इज अ विंडो पीछे की तरफ, ऐसा विंडो होता है, ऑडियंस वहाँ बैठे है, तो यहाँ पीछे है, तो द कैरेक्टर स्टैंड्स लाइक दिस। यहाँ से मैंने लाइटिंग दिया था पीछे से, नीचे से ब्लू लाइट वगैरह। तो सर ने बोला दैट्स अ नेगेटिव मूवमेंट, एक्टर ऐसा चल के गया वहाँ पर एक है। तो सर 1 मिनट, सर का नोट्स है मेरे पास। तो मैं गया लेके आया, तो उसमें मैंने बताया, व्हाट इज इट सर, फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द परफॉर्मेंस नेगेटिव मूवमेंट कैन बी टेकन बोल के सर ने बोला था। तो मैंने ये बताया, सर मेरे को ऐसा देखा, मैं बोला सर यू गो बस हो गया। तो ऐसा उन्होंने मुझे ये किया था। तो 1 2 बार ऐसा ये हुआ था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन।
सर हमेशा I love sir's criticism also. Like भास्कर सर भी ऐसे ही करते हैं, राम ये क्यों आपने किया, ऐसा क्यों किया. तो नाट्य शास्त्र जब हमने ये किया था, सर वो सो ओवरवेल्ड. 4 बार उन्होंने कॉल किया रात में उस दिन, भास्कर सर 4 बार बोले कि यार तूने ऐसा सोचा भी कैसे, हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट. क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस का मैंने लाइट से किया था, विद द क्लॉथ, नियॉन क्लॉथ यूज करके किया था. सो ही वाज सो, एंड उसका बिट उन्होंने मंगवाया और ही सेंट इट टू डिफरेंट प्लेसेस सेइंग कि दिस इज हाउ यू कैन टीच. बोल के नाट्य शास्त्र का जो है, सो लाइक दिस आई हैव लर्न मैनी थिंग, आई हैव फेस्ड देम, माय गुरुज. बट ऐसा नहीं है बोल के किसी ने ज़्यादा ये नहीं किया. सो आई ट्राई टू डू इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल, बट यस, एज अ ह्यूमन definitely there might be mistakes where we might not see, the audience or somebody might see, and especially my gurus. वो तो गुरु है तो पकड़ ही लेंगे, बोलेंगे कि ये गलत है, ये सही है. तो this was a thing which I always remember and I share it with my students also कि ऐसा होता है. So, like you have mentioned, like this question was in my mind to ask. You have mentioned to enhance the characteristic beauty or Aesthetic specific beauty. aesthetic beauty. That need to be for that need to be shown a back. No, not required. Okay. You can show, you can take a negative movement. Okay. यानी अभी तो दिस इज क्लीशेड, शोइंग बैक इज क्लीशेड, अभी चले गया. पहले जमाने में ये करते थे कि क्योंकि दे टू मूव बैकवर्ड्स, बिना पीठ दिखाए दे टू मूव बैकवर्ड्स बिकॉज वो पूरे लेसेस वगैरह रहता था एंड रॉयल क्लैन यूज्ड टू सिट इन फ्रंट वो टाइम में. बट नाउअडेज यू कैन टेक नेगेटिव मूवमेंट्स एनी टाइम, बट दे शुड बी अ पर्पस. अभी कोई राजा है तो ही कैन टाई हिज हैंड्स बैक एंड ही कैन वॉक बैक. ऑडियंस वहाँ है, वहाँ से आप टर्न करके आप वॉक बैक कर सकते हो, आराम से आके यहाँ से आप ये कर सकते हो. यू एक्ट थ्रू योर बैक. तो हाथ अगर मेरा पीछे बंधा हुआ है, आई एम डूइंग दिस, तो उसका टेंशन दिखा रहा हूँ मैं. देन वो बोल के ऐसा किया तो फिर टर्न किया, तो दैट विल गो विद द मूवमेंट. तो इसके लिए एस्थेटिक ब्यूटी एनहांस करने के लिए वी कैन यूज नेगेटिव मूवमेंट. Is this the only negative moment or is there many moments? Sorry. No, there are few more. There are few more. ऐसा बहुत सारी चीजें हैं. Technically we can learn when we are going through the course. We definitely learn many things. But this is to enhance the aesthetic beauty. We can take negative moments As per the character. as per the requirement of the character, artist or the situation. Yeah. Situation के हिसाब से भी हम लोग mood create करने के लिए भी ले सकते हैं. ऐसे भी है. It was a question in my mind, like Okay. it should be cleared out. Definitely. Before we wind up, sir, any kind of message to our audiences, like people who are willing to get into a theater work, who wants to enhance their skills, want to evolve in it? Definitely, I would say कि guys believe in theater also. Theater is something, it's really magical, and once you get in there, put your whole self in and try to relish, try to enjoy, try to be part of whatever is being given or thrown at you, and डोंट थिंक मैंने क्या सीखा अभी, मैं मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा. जस्ट थ्रो योर सेल्फ इन, बी देयर एंड एनग्रॉस योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी अ लर्नर. Do not think or try to even think that I have learned everything. Try keep learning, and this will help you. And if not anything, at least your personality, it's for your development. So theater में सब कुछ होता है. You have dance, you have painting art form है, you have music, because theater is a mixture of all art forms. So I would love to tell all of you, so please believe in theater and be a passionate theater practitioner, and the life becomes really happy, I should say. Thank you. Thanks for your valuable time, sir. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you.